Hello, Assalamu alaikum everybody. Whoever has tuned in, I am here. Assalamu alaikum. We're just going to wait a few minutes for more people to join in. Thank you for coming on. Assalamu alaikum even to my Instagram followers. Happy World Autism Awareness Day. हम आज लाइव हैं इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी. अब मैं दोनों स्क्रीन्स को देख रही हूँ. ये पहली बार है कि मैं दोनों कर रही हूँ, तो bear with me. But we're just going to wait on for a few minutes and inshallah we will get started soon. Assalamu alaikum, Khizi, Uzma. Happy World Autism Awareness Day, Orion School. Thank you for joining in. Okay, so we're gonna go ahead and start. Today's World Autism Awareness Day, and today's the 2nd of April. So what does that mean? What does World Autism Awareness Day mean? World Autism Awareness Day आज का दिन है जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं ऑटिस्टिक लोगों को. अब मैं थोड़ा ऑटिज्म के बारे में बात करूंगी और उसके बाद जो भी आपके सवाल हैं मैं कोशिश करूंगी पूरा सवालों को जवाब देना. मैंने एक डिफ़ॉल्ट डिस्क्लेमर देना है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये टॉक उर्दू में करूं, लेकिन मैंने बस कहना था कि मैं पाकिस्तान 15 साल के बाद वापस आई हूं और अब 5 साल हो गए मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ वैसे आई हैवंट लिव्ड हियर फॉर मैनी इयर्स. तो जो भी मैं सवाल के जवाब उर्दू में बोल सकती हूँ मैं बोलूँगी. एंड लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट. ओके, सो पहली बात ये है कि ऑटिज्म का लफ्ज़ कहाँ से आता है. ऑटिज्म का लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड से आता है ऑटस, जिसका मतलब है सेल्फ. सेल्फ मीनिंग हम, अपने आप, राइट. तो जब ये ऑटिज्म के साथ ट्रांसलेट हो जाता है, इसका मतलब है सेंस ऑफ सेल्फ, कि ये अपनी आप के बारे में सोचते हैं. दैट इज़ व्हाट ऑटिज्म मीन्स. सो ऑटिज्म का मतलब क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, न्यूरो डेवलपमेंटल. अब फ़र्क क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो होता है उन लोगों में जहां उनकी न्यूरोलॉजिकली, उनके बायोलॉजिकल और उनके nerves in their brain works differently to those who are typical. A mental health disorder could be related to chemical imbalances and other impacts on their emotions and their behavior, whereas autism is a developmental disorder. It impacts जिस तरह से individuals cognitively respond करते हैं, neurologically वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे communicate करते हैं, उनके speech के मसले होते हैं, जो भी होगा. So autism is a neurodevelopmental disorder, not a mental health disorder. पहली बात तो ये है. दूसरी बात मैंने कहना है कि autism is a lifelong condition. It stays for life. इट्स नॉट कि ऑटिज्म आता है चाइल्डहुड में और फिर उसका क्योर होता है और फिर वो चला जाता है. ऑटिज्म ज़िंदगी भर रहता है. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम
राइट इंटरवेंशंस करें, राइट थेरेपीज़ में जाएं, पेरेंट्स भी काम करें बच्चे के साथ, थेरेपीज़ पे चलते हैं, स्कूल शायद जाएं, तो फिर ये बच्चे की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बहुत ज़्यादा। अब ये एक चीज़ याद रखिए, ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का ये मतलब है कि आपका बच्चा सिवियर से लेकर माइल्ड हो सकता है, सिवियर से लेके मॉडरेट से लेके माइल्ड, कहीं भी उस स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। और कोई एक बच्चा जो ऑटिस्टिक होता है वो सेम नहीं होते, सारे फर्क होते हैं। तो मैंने ये कहना है कि अगर आपका बच्चे में कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स आती हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिम्टम्स कोई और में आएगा। मुझे एक सेकंड दे। अच्छा, अब मैंने कहना है कि ऑटिज्म में जो ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें कौन कौन से मसले होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑटिज्म में दो मेन सिम्टम्स होती हैं। एक होता है लैक ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन इश्यूज, जिसमें बच्चों में या इंडिविजुअल्स में कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, उनको लोगों को समझना, रेसिप्रोकल बातें करना कि कोई सवाल करेगा वो जवाब देंगे, कम्युनिकेशन करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, ये उनके लिए मुश्किल होता है। सोशल इमोशनल सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, तो वो ज़्यादातर अपने आप रहते हैं, वो लगते इंट्रोवर्टेड होते हैं। दूसरा जो मेन सिम्टम होता है वो होता है रिपेटिटिव एंड स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स। उसका ये मतलब है कि वो कभी कभार वही बिहेवियर बार बार करें। अच्छा, अब मैं जानती हूँ हम सब एक गाना बार बार सुनते हैं, फिर हम थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं अच्छा ये गाना काफ़ी सुन लिया अब और नहीं सुनना। लेकिन इनके साथ इनकी आदतें होती हैं कि इनकी ऑब्सेशंस हो जाती है। कोई बच्चों को डायनासोर्स की ऑब्सेशन होती है, बेबी शार्क की ऑब्सेशन होती है, वही चाहिए, वही बेबी शार्क चाहिए। कोई बच्चों में खाने में ऑब्सेशंस होती हैं। सो उनके ऑब्सेशंस उस तरह के होते हैं कि अगर आप वो चीज़ ले लें, उनकी टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, एंड दे आर नॉट इन बैलेंस विद द एक्चुअल इशू दैट अकर्ड। ठीक है, तो they lack social communication issues and repetitive and stereotypical behaviors. इनके sensory behaviors भी होते हैं, और sensory behaviors वो होते हैं जो हम सब के अंदर 5 senses होते हैं: smell, taste, touch, sight and hearing। हमारे 5 senses होते हैं। इन बच्चों में क्या होता है कि ये कभी हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, कि ये ज़्यादा किसी सेंस पे सेंसिटिव हो जाते हैं। आप शायद कभी देखा है कि बच्चे अपने कानों को बंद करता है, या फिर वो जो फैंस घूमती हैं वो बार बार देखते हैं, आंखों के कोनों से देखते हैं, लाइट को ऑन ऑफ करना, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। और कोई बच्चे होते हैं तो कम सेंसिटिव होती हैं। सो जब आप इन बच्चों के साथ होते हैं और आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे होते हैं दे डोंट लाइक द नेल्स बीइंग कट, द हेयर बीइंग कट, ये बहुत कॉमन मसला होता है, बिकॉज दे हैव सेंसिटिविटी इश्यूज। सो व्हेन दे हैव सेंसरी इश्यूज वी नीड टू डील विद दैट बाय डिसेंसिटाइजिंग देम। यू डोंट फोर्स देम कि नहीं कटवाना ही कटवाना है, नहीं, आपने डिसेंसिटाइज कराना है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इनके साथ काम करेंगी। एक बच्चा हमारे पास आता है आई केयर में, वो नाखून को काटने नहीं देता, वो चाहता है कि वो नेल कटर के करीब ही नहीं आए। तो पहले हमने नेल कटर को बस टेबल पे रखा, साथ साथ हम काम करा रहे हैं, तो कोने में नेल कटर पड़ा है, जस्ट टू लाइक गेट हिम यूज्ड टू इट बीइंग अराउंड हिम। उसके बाद हमने नेल कटर को थोड़ा आहिस्ता सामने किया, फिर वो अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। सो आहिस्ता आहिस्ता से उसकी टॉलरेंस डेवलप की उस नेल कटर के साथ। फिर हमने क्या किया कि हम जब बच्चे को एक चीज़ पसंद नहीं होता तो हम बैलेंस करते हैं कि नेल कटिंग तो नहीं पसंद, लेकिन चिप्स पसंद है, चॉकलेट पसंद है, कोई सॉन्ग पसंद है। तो आप क्या करते हैं कि आप अब नेल कटिंग का वैल्यू नीचे है यहाँ, और वो अच्छी चीज़ों का वैल्यू यहाँ होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने नेल कटिंग की वैल्यू ऊपर करना है। कैसे करेंगे कि हम उनको साथ साथ नेल कटर को एक्सपोज करेंगे और साथ साथ चिप मिल रहा है, तो फिर वो सोचिए एक्चुअली नेल कटिंग इतना बुरा नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता से आप इन सेंसिटिविटी पे काम करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि आप लिखें टुडे इज़ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 100 टाइम्स, आप बोलेंगे मैंने तो नहीं करना, 100 टाइम्स कौन लिखता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि अच्छा अब 2 बार लिखना, 2 सेंटेंसेस लिखना, फिर मैं आपको एक छोटा सा चिप दूंगी या गाना प्ले करूँगी 2 सेकंड के लिए, फिर आप 2 लाइनें लिखना, फिर मैं दूंगी। इससे क्या होता है कि फिर बच्चे
फिर आप भी सोचेंगे कि एक्चुअली नहीं, इतना बुरा नहीं है, ठीक है, अगर ये भी मिल रहा है साथ साथ तो फिर सही है। तो फिर आहिस्ता वैल्यू भी बढ़ जाती है उस चीज़ की। तो ऐसे आप डिसेंसिटाइजेशन पे काम करते हैं। अब ये आ गया ऑटिज्म के सिम्टम्स। अब इस आगे जाएंगे रेड फ्लैग्स कि ऑटिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ऑटिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए ऑटिज्म की रेड फ्लैग्स को देखना चाहिए। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? द इंडिकेटर्स कि अच्छा शायद बच्चा ऑटिस्टिक हो। एंड व्हाट आर दे? लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, लैक ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू नेम, दे स्पीच डिले, सेंसरी इश्यूज। फिर क्या हो सकता है कि they could, for example, they might have repetitive behaviors, they might have tantrums जो इतनी ज़्यादा सिवियर होती हैं। यह भी हो सकता है कि बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेकंड, मेरा इंस्टाग्राम लाइव बंद हो गया। अब आपको पता है हम पाकिस्तान में हैं, तो इसमें क्या मसला आ जाता है कि हमारी इंटरनेट भी कभी कभार सही नहीं चलती। चलें, hopefully it's back on track. Right, sorry about that. Sorry about that to all the Instagram watchers. मेरी इंटरनेट नहीं चली गई, पाकिस्तान है तो अब हम 3G पे आ गए। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको पूरा ट्यून इन रखना है तो better to follow on Facebook. The connection is most likely better there. Okay, going back. So essentially हम red flags of autism के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने ये थोड़े बहुत आइडेंटिफाई किए हैं। एंड देन मूविंग ऑन फ्रॉम द रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज्म, फिर आप सोचेंगे व्हाट डू आई डू इफ़ आई सी दीज रेड फ्लैग्स? बच्चे के साथ क्या करूं? ये बहुत बड़ा सवाल है। पेरेंट्स को पता नहीं होता कहाँ जाना है, किससे बात करना है, क्या करना है, कौन सी थेरेपी करनी है। और ये मैंने सैडली देखा है कि अगर कोई पेरेंट किसी के पास जाए तो बोलेंगे पेरेंट को डू स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, OT, ABA, सब कुछ कराएं। बट समटाइम्स यू नीड टू स्पेसिफाई विच वंस आर इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड देन डू अदर थेरेपीज। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि शायद आपके बच्चे में सिम्टम्स हैं तो फिर आप पहले एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे। वो फिर कहेंगे कि अच्छा बच्चे में शायद ये सिम्टम्स है आपका, वो इंटरव्यू करेंगे, थोड़ा केस हिस्ट्री लेंगे और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे कि then they can go on and start therapy. But first you go to a psychiatrist or psychologist. After that they will refer you on to go for therapies. Occupational therapy, speech therapy, ABA therapy. हम आई केयर में ABA therapy करते हैं। तो मैंने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैं कराची में रहती हूँ। आई रन एन इंस्टीट्यूट कॉल आई केयर. We do ABA therapy. I have a team of about 10 women, amazing ladies. They run the sessions with me and all we do is ABA therapy. ABA therapy में क्या होता है? It's behavior therapy. Behavior का मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं behavior का मतलब है कि बच्चा मारता है, बच्चा रोता है, बच्चा चीखता है, बच्चा किक करता है। But no, that's not only behavior. Behavior is everything a living human does. That is behavior. Lack of speech is behavior. Hand washing, toilet training, eating issues, sleeping issues, following instructions, ये सारी चीज़ें behavioral issues कहलाते हैं और behavior कहलाते हैं। तो we cover all of these things essentially in ABA therapy to help a child reach their maximum skill potential. एंड हमारे साथ जो बच्चे आते हैं वो होते हैं between 2 to 7 years old. We work on early intervention. जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके बच्चा शायद ऑटिस्टिक है या रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, डायग्नोसिस भी नहीं हो, दैट्स फाइन, थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए ताकि जब इंटरवेंशन शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद आप बच्चे के साथ उसी वक्त शुरू करें थेरेपी। बिकॉज बच्चों की एक वायरिंग होती है ब्रेन की। द क्विकर यू ब्रेक द हैबिट्स एंड यू टीच देम, द क्विकर दे लर्न. Okay, so moving forward from the red flags of autism, I want to talk about something called regressive autism. मैंने कल एक टॉक किया था स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के साथ, ऑटिज्म पेरेंट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ about autism for Autism Awareness Week. And बहुत से लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि मेरा बच्चा तो पहले बोलता था, फिर वो उसका स्पीच चला गया, वो पहले कैमरे में देखता था, अब वो कैमरे में नहीं देखता, वो पहले मुझे मामा बुलाता था, अब मामा नहीं बुलाता। इसको कहते हैं रिग्रेसिव ऑटिज्म. 18 to 44% of cases of autism are regressive autism. The reason मैं ये काम करती हूँ क्योंकि मेरे चचा के अपने बेटे हैं जो अब 21 साल की हो गए हैं, और मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी वो मामा अंडा पानी कहता था,
उसकी भी स्पीच चली गई थी। अब रिग्रेसिव ऑटिज्म का ये है कि क्या होता है कि बच्चा दिखाता है कि उनके ये चीज़ें कर सकते हैं, शायद बोलें, आई कांटेक्ट अच्छा है, नाम को शायद रिस्पॉन्ड करें, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि उनकी ऑटिस्टिक ट्रेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं एंड इवेंचुअली उनकी जो पहली स्किल्स जो पहले पेरेंट्स देखते थे वो फेड अवे हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट रिग्रेसिव ऑटिज्म इज़ कि they have autism and eventually it comes after they might display typical symptoms, but then जितना टाइम बढ़ता है उनके फिर ऑटिस्टिक ट्रेट्स ज़्यादा apparent हो जाती हैं. So that is what regressive autism is. And it's very common. A lot of cases मेरे पास clients आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बोलता है तब नहीं बोलता. तो अब एक और चीज़ मैंने बात करनी थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये मैंने पहले भी बात कर चुकी है इसके बारे में कि What does the word verbal mean? अब जब भी मैं टॉक्स पे जाती हूँ मैं पूछती हूँ what does verbal mean? लोग कहते हैं कि बच्चा बोलता है, स्पीच है. नॉन वर्बल मीन्स वो बोलता नहीं है, वो बात नहीं करता. So they think verbal means speech. No. Verbal means the child can communicate. Sign language, verbal behavior. पिक्चर से पॉइंट करके दिखाना कि उनको क्या चाहिए, वर्बल बिहेवियर. बात करना, वर्बल बिहेवियर. ये सारे वर्बल बिहेवियर्स होते हैं. बच्चा वर्बल है अगर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन जो आप कहना चाहते हैं वो है वोकल वर्बल बिहेवियर या बच्चा वोकल है. स्पीच की जब मामले में बात करते हैं इट मीन्स वोकल, नॉट वर्बल. So when you bring your child to me, जैसे मेरा बच्चा वर्बल नहीं है, वो थोड़े से लफ्ज़ बोलता है, वो वर्बल है, वो वोकल भी है, लेकिन शायद उसका फंक्शनल स्पीच नहीं है जहाँ वो एक्चुअली आपसे बात कर रहा है कि आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है. That's what functional speech means. So that's the golden aim, is that I want my child to be able to talk to me with a purpose. मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मामा या बाबा बोले जब हमको बुलाने चाहते हैं. मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कोई भी लफ्ज़ बोले जब उनको मांगना है. अब मैंने एक चीज़ कहनी है कि अब बिहेवियर थेरेपी और ऑटिज़म में क्या क्या कनेक्शन है. अब जब बच्चे की स्पीच कम होती है, कम्युनिकेशन के मसले होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो आप उनकी बात नहीं समझ सकते. और अगर आप उनकी बात नहीं समझ सकते, इन फ्रस्ट्रेशन दे मैनिफेस्ट थ्रू बिहेवियरल इश्यूज विच आर हिटिंग, बाइटिंग, स्क्रैचिंग, other sorts of behaviors because they're frustrated. Imagine आप कहीं दुनिया में जाएं या मैं अभी ये पूरा टॉक चाइनीज़ में करूं और मैं बोलूं थॉन्ग फेंग कॉन्ग थे साफ है, आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या कह रही है, राइट. सो यू नीड एंड द सेम वे जब आप इन बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली तो छोटे होते हैं, आप कहते हैं कि मेरा बच्चा तो मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं करता. क्यों? क्योंकि जब हम इनसे बात करते हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा. ये बच्चे कैसे समझते हैं? दैट इज़ थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन. दे लर्न थ्रू एसोसिएशन. अगर आपने अपने बच्चे को सिखाना है स्टैंड अप, सिट डाउन, हाई फाइव, कप टेबल पे रखो, आपको लगता है कि मेरा बच्चा सुन रहा नहीं, मैंने एक दफ़ा कराया नहीं कर रहा, नहीं, आपने रिपेटिटिवली सिखाना होगा और आपने थ्रू एसोसिएशन. आप बोल रही है, अगर आपने कहना है ना टेबल कप को टेबल पे रख दो, राइट, तो आप बोलेंगे कप को टेबल पे रख दो, नहीं रख रहे. क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा. फिर आप बोलेंगे कप को टेबल पे रख दो, उनका हाथ पकड़ के उनसे कप पकड़वाएं और फिर उनको टेबल पे रखवाएं. फिर आप बोले कप को टेबल पे रखो और फिर कप उठवाएं, फिर टेबल पे रखवाएं, और आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे. तो ये मेरा कहने का मकसद है कि they learn through repetitive teaching and through association. Very, very important to know this. If your child is not learning a skill, it is not their fault. It is our fault because we should teach them in a way that they understand. The thing with autistic bache is that their way of thinking and their way of processing the world and how things happen is very different to the way we do. So the most important thing is go into their world. Don't expect them to come into your world because you know better than them. So it's very important जब आप उनको कुछ सिखा रहे हैं, आप उनको उस तरह से सिखाएं कि उनको समझेगा.
आपकी तरीके नहीं। अब एक और चीज़ मैंने कहना था कि बहुत से पेरेंट्स अटकते हैं कि मेरा बच्चा एबीसी करता है, मेरा बच्चा कलर्स करता है, मेरा बच्चा नंबर्स करता है। अगर आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता अपने बेसिक नीड्स, ये नंबर्स, लेटर्स, शेप्स, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन चीज़ों पे फोकस ही ना करें, आप एकेडमिक गोल्स पे फोकस ही ना करें, आप राइटिंग पे फ़िलहाल फोकस ना करें। योर गोल शुड बी एज अ ह्यूमन, I want my child to communicate their basic needs. Priority. The same way the child will want water, food, sleep, hygiene, all of these things, oxygen, human needs. Communication is a human need that comes before and above academics, eye contact, which is sustained. They just need to be able to tell you what they want. That is the most important thing. If they're not responding to their name, it's okay. Itna stress na kare. Eventually aayega, because they become more aware as they get older. But what you want to focus on is, I want my child to communicate. If they cannot speak, teach sign language. If you cannot do sign language, use pictures. Find a way that will help them to communicate their needs. Priority. It's called in ABA terms manding. Manding means requesting for items or actions that the child is motivated for. So that is very important, is focus on your child's needs and get them to communicate their needs. So I just touched upon a couple of things regarding what is important about autism that you need to understand as a parent, as a professional. Go into their world, teach through repetition, they learn through association, and number one goal, be patient. अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख रहा, it's because it sometimes takes time. Every child learns at a different pace. That's okay. That's okay. Follow their pace and move along with their pace. That is the most important thing. If one child learns something very fast, some children might learn slower. And remember something, parents, कि अगर आप अपने बच्चे को थेरेपी भेज रहे हैं, आप ये ना सोचें कि थेरेपिस्ट के हाथों में कोई मैजिक होता है, ठीक है? आप ये याद रखें कि हम जो कर सकते हैं हम करेंगे. Absolutely. But you are the best therapist for your child. You are with them 23 hours of the 1 hour that they are with us, or 2 hours that they are with us, or at the therapist. And you need to work with your child yourself. Learn from the therapist. जितना आप अपने बच्चे के साथ करेंगे उतना ही उनके रिजल्ट्स आएंगे. ये मैंने खुद ही देखा है. जब बच्चे कि माँ बाप बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके रिजल्ट्स इतने जल्दी आते हैं, और जो नहीं काम करते वो सिर्फ रिसोर्स टीचर के ऊपर छोड़ देते हैं, जो वैसे भी इतने ट्रेन नहीं होते. फ़ायदा क्या? You are the most invested human in your child, so invest in them, because remember, Allah gave you that child for a reason. उनको छुपा के नहीं रखनी चाहिए. आप उन बच्चों को इस ज़िंदगी पूरी दुनिया में दिखाएं. आपने ग्रोसरी शॉपिंग जाना है, ले जाएं. आपने मॉल जाना है, ले जाएं. डोंट बी अशेम्ड कि लोग क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा बोलेंगे मेरा पागल है. बोलते हैं, और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो उनको समझ ही नहीं आता कि ये बच्चा हैंड फ्लैपिंग क्यों कर रहा है, टिपटो पे क्यों चल रहा है, ये अजीब है. देखने दें. अगर आप अपने बच्चे के लिए खड़े नहीं होंगे, कौन होगा? कौन होगा? कोई और नहीं होगा. और ये लोग क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस. सो जितना आप अपने बच्चों को बाहर लेके आएंगे और लोग देखेंगे, फिर वो समझेंगे इसके बच्चे के साथ क्या मसला है. Then they go into understanding it, and they find out, oh, ये autism है. And autism, by the way, is increasing. Currently, according to the Center of Disease Control in the US, which does the stats, it's 1 in 44. It's probably going to go down to 1 in 32. It's going to be as highly diagnosed a developmental disorder as depression. That is the rate at which autism is increasing. So don't take this lightly. जब हम कहते हैं कि Autism Awareness Day, autism, it's because we want people to know that if you think your child is autistic, identify it now. Because if you identify it now, you can work with them now for the betterment of your child. So that is just some words of wisdom from my side, some nuggets of knowledge for you. And of course, I'm here to answer your questions today. I've been talking for 25 minutes now, and I want now for you to put your questions on the chats, Instagram, Facebook. I'm on both,
and I want you to ask away what would you like to know. मैंने एक चीज़ बोलना है कि बहुत से लोग अपने बच्चों के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके बच्चे के बारे में स्पेसिफिकली जवाब भी दूं, लेकिन आपने एक चीज़ समझना एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, व्हेन वी अंडरस्टैंड अ चाइल्ड कि बच्चा क्यों वो चीज़ करता है, हमको हर वक्त जानना है कि एंटीसीडेंट क्या था, ट्रिगर क्या था उस बिहेवियर का, कि फिर वो बच्चे ने उसके बाद कॉन्सिक्वेंस क्या थी. बच्चों को समझने के लिए हर वक्त एक ट्रिगर होता है जिसके बारे में एक बिहेवियर होता है, और बिहेवियर के बाद एक कॉन्सिक्वेंस होता है. डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सिक्वेंस वो बिहेवियर आइदर बार बार होगा या नहीं बार बार होगा. अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं, इम्तियाज जाते हैं, बच्चे को चिप्स चाहिए, आपने बोला नहीं, बच्चा रोता है, ज़मीन पे लेट जाता है, फिर आप क्या करते हैं, आप बोलते चलो चिप्स ले लो. अब क्या हुआ, अब इस सिचुएशन में अब अगर आप एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस देखें, A B C देखें, तो ये 3 स्टेप्स में एंटीसीडेंट क्या था, डिनाइड एक्सेस, आपने बोला नहीं मिलेगा. बिहेवियर क्या था, बच्चे ने रोया और लेटा ज़मीन पे. कॉन्सिक्वेंस क्या था, आपने दे दिया. अगली बार क्या होगा, बच्चे को वो चीज़ चाहिए, आप बोलेंगे नहीं, बच्चा टैंट्रम मारे छोड़ेगा, आपको फिर देना पड़ेगा. सो ट्राई एंड मैनेज योर चाइल्ड इन अ वे कि यू डोंट encourage these behaviors. You want to teach them that if you want something, you have to ask for it appropriately, and if you want to deny access, which is okay, कभी कभार वो बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर आप कोशिश करें एक ऑल्टरनेट ऑफर करें. आप ये सोचिए, अभी ईद आ रही है, आप जूतों की दुकान जाएंगे, स्टाइल हो जाएंगे, जो हमारी दुकानें हैं, और आप बोलेंगे मुझे वो सिल्वर पेयर चाहिए इस तरह हील के साथ. मैन बोलेंगे मुझे ये जूता चाहिए ब्राउन लेदर मॉकसिन स्टाइल, और दुकान वाला बोलेगा सॉरी सर, सॉरी मैम, आपका साइज़ हमारे पास नहीं है. फिर बोलेंगे लेकिन हमारे पास ये है, हमारे पास ये है. यही होता है ना दुकानों में. ये क्यों करते हैं? They don't want to disappoint you. They don't want to feel like they're not giving you what you want, and they don't care about you. And we use the same principle with our kids. If we don't want to give them something, try and offer an alternative. If they're not willing to accept the alternative, then don't give them anything. But remember, the alternative should be of equal value to what they want. अगर आपने अभी एक बड़ी सी पैकेट चिप्स की खाए और आपको प्यास लग रही है और आप मेरे से पानी मांगे और मैं बोलूँ पानी नहीं मिलेगा, एक और चॉकलेट ले लो. अब ये ऑल्टरनेट देने में कोई फ़ायदा तो नहीं है. इनकी थर्स्ट को आप बुझने नहीं है ना. दे थर्स्टी, दे वांट वाटर, दे डोंट वांट चॉकलेट. सो इफ़ यू ऑफर्ड ऑल्टरनेटिव, लाइक पानी नहीं मिलेगा लेकिन जूस मिलेगा, तो जूस के साथ या पानी के साथ दोनों की वैल्यू उस तरह की होती है कि फिर वो थर्स्ट बेहतर होगी. सो ऑफर एन ऑल्टरनेटिव दैट इज ऑफ इक्वल वैल्यू टू व्हाट दे वांट. Right, moving forward, do we have any questions? Would anyone like to ask anything? I'll have to scroll up because I did see a couple on Instagram. Thank you to all those who have joined in and all your sweet comments. Wonderful. Right, we have a question about stem cell therapy. Thank you for this question, Zaibi. Thank you. So, stem cell therapy is all a matter of our human body is made of cells, right? That helps us function. Stem cell therapy is about adding certain cells into the body which will help individuals with certain issues. There is research that is being done on children with autism कि आप stem cell therapy करेंगे और बच्चा फिर बोलता है, बच्चे की autistic symptoms कम हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें. Honestly, there is not enough research. Sure, maybe एक pilot study में 2, 3, 4, 5 बच्चे successful थे, कितने unsuccessful थे. There is no evidence or not enough evidence to prove stem cell therapy. Don't go for stem cell therapy. Don't go for the hyperbaric oxygen tank which they say you put your child in this tank and oxygen और ये देते हैं और बच्चा बोलता है. No, there is not enough evidence. ये जो diets चलती हैं, no evidence. Gluten free, no evidence. Yes, आपका बच्चा gluten intolerant है, फिर उनको gluten free diet पे डालें. आपका बच्चा कोई चीज़ें हजम नहीं कर सकता, ठीक है, फिर आप उनकी डाइट बदलें, वरना नॉर्मल डाइट इज परफेक्टली सफिशिएंट. श्योर, बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, कट डाउन ऑन द शुगर्स, कट डाउन ऑन ऑरेंजेस, कट डाउन ऑन चॉकलेट्स, carbs, sweets, cut down on that. Sure, whatever your child is intolerant to, I would advise that avoid those. Otherwise, normal diet, normal. ये सारे जो myths होती हैं, goat's milk दें, not enough evidence to prove it. बहुत से parents, I understand, they're desperate कि जो भी evidence निकलता है, I want to use that on my child. But because you want it to work, but as a professional in the field who does
a lot of reading into the research, as we have to as behavior analysts. BCBA is board certified behavior therapist, जो हमारी एक board है अमेरिका में, हमारी भी एक standard होती है, and we have to follow credits, and we have to also keep up to date with research. And all of it states, if there is not enough evidence, don't follow the trend just because कोई और कर रहा है. Okay, moving forward. The difference between autism and ADHD. Okay, autism spectrum disorder, as I said, is a neurodevelopmental disorder, and so is ADHD. ADHD is also a neurodevelopmental disorder. Both of them are neurodevelopmental disorders, which means they impact the development in the mind and the way the human mind works, and it impacts the way they work cognitively, intellectually, in speech, in communication, in a variety of things. However, autism is lack of social and communication issues. Autism is a matter of repetitive behaviors, sensory behaviors, speech delay. That's all autism. ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. This means the child has attention issues and has hyperactivity issues. Some children are ADD, Attention Deficit Disorder. Deficit means they lack attention. They lose focus very fast. Over 60% of the cases with autism have ADHD, so they do overlap, where they could be hyperactive or lack attention. But autism and ADHD are very different. Autism is about social issues, social communication issues. ADHD is about lack of attention and hyperactivity. Right, moving on. Homeopathic medicines, no evidence for Jiha. Don't recommend it. If it doesn't have enough evidence, don't use it. People try it because they think shayad it works, but frankly speaking, I truly believe that all of these homeopathic and stem cell, apparently there's a clinic in Karachi that convinces parents about stem cells. I had this discussion with a client the other day. Not enough evidence to prove it, not worth the risk. And by the way, stem cells is dangerous as well because they inject into the child's spine, which can be detrimental for them. Okay, I talked about gluten-free diet. Hi Sakena, thanks for tuning in. I talked about the gluten-free diet. The gluten-free diet has no evidence for helping with autism in terms of making a child talk or making a child have eye contact. Not enough evidence to be a useful intervention to think it's a cure. Not enough evidence. I don't recommend gluten-free diets. I only recommend gluten-free diets if your child is actually gluten intolerant. If they're not intolerant, why should we take away the gluten from their diet? So it's all a matter of, first you have to look at it medically. Is there a medical issue with my child with gluten? If there is, don't give it. If there isn't, continue with the normal diet. Right, moving forward. How early can a child be diagnosed? A child can be diagnosed as early as 2 years old, 18 months. I don't recommend it. In fact, America में कहते हैं कि आपका बच्चा 3 साल से पहले हम डायग्नोज करेंगे भी नहीं, बिकॉज उस वक्त तक सिम्टम्स सारे नज़र ही नहीं आते. तो डायग्नोसिस करके क्या हो सकता है कि वो रॉन्गफुली डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है कि फिर बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है ऑटिज्म के लिए और शायद ऑटिस्टिक है भी नहीं, शायद कोई और मसला हो. सो यू वांट अ चाइल्ड टू बी ओल्डर सो दैट सिम्टम्स आर क्लियरर एंड देन गेट अ डायग्नोसिस. आई recommend if you want to get a diagnosis, always go see a psychologist or psychiatrist after 3 years of age. If your child is autistic, can it increase with time? Thanks, Arwa. Can it increase with time? Not increase. Having said that, welcome Wajiha. Having said that, yes, ADHD is also lifetime. Having said that, what can happen is if you don't tackle the issues which your child is facing who is autistic, what can happen is that they will not develop skills further. That is what will happen. So if we say it gets worse, I wouldn't say it gets worse. What will happen is they'll be where they are and they may not progress further. So you want to always, your children are like sponges. The more you teach, the more they learn. Always think of your child as कि मैं इस सिचुएशन को एक टीचिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकती हूँ, बच्चे को मैं इस वक्त क्या सिखा सकती हूँ. देयर इज ऑलवेज टीचिंग अपॉर्चुनिटीज. द मोर यू टीच देम, द मोर यू इंडिपेंडेंट यू मेक देम, द मोर दे विल लर्न. So that is very important. All right, moving on. So we've got tips for name responding and eye contact. Hello Hina, nice to hear from you. Hina, ये जवाब आपको अभी तक आपको अंदाज़ा होगा, but I know you're asking because of the audience over here. Hina was an ex-therapist at eye care. Working on name responding and eye contact. Very, very common question.
So what happens is, when it comes to name responding and eye contact, there are two different skills. Eye contact is when a child does not look at you very much, right? It's because autistic children generally are in their own little world and they're happy playing on their own and they're not used to socializing. So to develop eye contact, it requires interaction with them. And screen time, I'm not against screen time is okay, but by giving a child screen time, they get used to interacting with the screen, not an adult. So what you want to do about eye contact is play with your child. The wheels on the bus go, wait, they look at your eyes, then you continue. So what happens is, when they look at your eye, then you continue. So you start using eye contact as a request, and because they look at your eyes because they want you to continue, right? So they're requesting, continue mama, continue baba, without saying it. So use that eye contact as your cue. Okay, round and round, round and round, the wheels on the bus go, wait, eye contact, round and round. That's how you develop eye contact. Another way to develop eye contact is holding items near your eyes, and then they will look at the item, because individuals with autism fixate on details. So they look at what they want to look at, they won't look here, but then they will sometimes glance at your eyes. When they look at your eyes, you give the item. So again, you're using eye contact as a form of a request. That is a way to develop eye contact. Why is that important? Because when a child is motivated, they're more likely to look at you because they really want it, and that is your cue to be like, pehle dekhenge, phir main dungi, right? Okay, name responding, difficult one to teach. It takes time. It's one of the hardest skills to teach, to be honest with you, and I feel like it's easier to teach as children get older, because when they're younger, what happens is that they are less aware of their surroundings. So to develop name responding, what you want to do is you want to start in a पहले एक isolated setting में, कि आप एक कमरे में लेके जाएंगे, distractions नहीं होती, और आप एक reinforcer पकड़ेंगे जो उनको बहुत पसंद है, कोई खिलौना, कोई खाने की चीज़, और आप वो चीज़ पकड़ेंगे और आप बोलेंगे, अगर बच्चे का नाम जो भी है सना है, तो आप बोलेंगे सना, और वो नहीं देखेंगे, फिर आप बोलेंगे सना, जिस वक्त आपकी तरफ देखेंगे वो आइटम आप देंगे, and then slowly again you take the item, and then you say sana, they look at you, you give it. So they're getting used to that sound of sana, but at that point in time they still don't know कि sana उनका नाम है. How do you teach them it's their name? That's their identity. They don't know. But you have to practice this and get them used to the fact कि जब भी आप ये loves सना बोलते हैं, उनको आपकी तरफ दिखना होता है. Then you first do it in an isolated setting in front of them. Then you sit on their side, so they have to turn. Then you sit at the back and you say sana, and they have to मुड़ के देखना होता है. I'll tell you a very funny story, actually, talking about name responding. It was so cute. बच्चों के साथ जो होते हैं ना, जो ऑटिस्टिक होते हैं, उनको कभी कभार समझ नहीं आता कि अगर उनको कोई बुलाना है तो उनको उनका नाम बोलना होता है टू आइडेंटिफाई, बिकॉज उनको नेम की अंडरस्टैंडिंग कम होती है. तो मैं लंदन में काम करती थी और मेरा एक क्लाइंट होता था यूसुफ छोटू, वो मेरे साथ होता था. हम 1-to-1 थेरेपी करते थे फ्रॉम 9 AM to 2 PM 3 PM. ही वॉज विथ मी ऑल डे. तो एक दफ़ा हम ब्रेक में गए और मैं एक बच्चे के साथ खेल रही थी और वो भी भाग रहा था या जो भी, तो हम इकट्ठे सब प्लेग्राउंड में थे. तो मैं एक बच्चे के साथ खेल रही हूँ और पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ में ये हो रहा था, हाय. मैं सोच रही हूँ ये कौन कर रहा है. मैं फिर से दूसरे बच्चे के साथ खेलती रही. फिर करीब आवाज़ आया, हाय. फिर मैंने मुड़ के देखा और वो यूसुफ था, और वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था. कैसे? वो मुझे इमिटेट कर रहा था, क्योंकि हर सुबह जब मैं उसको गेट से उठा के लेती थी उसको स्कूल के अंदर लाने के लिए, वो जब बस पे आता था तो मैं मिलती थी, मैं बोलती थी हाय और हाय यूसुफ. सो ही ट्राइड टू गेट माई अटेंशन by imitating my tone instead of saying Isma, and he was vocal, he could speak. So then eventually I taught him to say Isma, and when he tapped me and he said Isma, I would turn. Then I'd get a therapist to make him tap me and say Isma, then I'll turn. So he then slowly realized कि जब भी मैं ये करता हूँ, मैं Isma बोलती हूँ तो वो मुड़ती है. And that's how you can teach the understanding of name. Right, I'm going to take
2-3 more questions and then I'm going to be signing off. But I want to say that this is World Autism Awareness Month and I'm doing more live videos on my page and on other pages as well. I've been invited on multiple pages to talk about this topic, so stay tuned because there'll be a lot more talks coming up. I've also started a YouTube channel which I'll be adding a lot of talks on different topics. I'll address stem cell research, I'll address diets, I'll address communication, many things. So do send your requests of topics so I can also add those to my list while I'm recording videos. Okay, what do we have here? Let's have a look. Personal question: why did you choose this line? Why are you so attached to autistic kids? Thanks, Anya. Oh, so my personal attachment is that my father's brother, my चाचा सन जो लाहौर में रहते हैं, उनका बच्चा ऑटिस्टिक है और जब से मैं बहुत छोटी होती थी I used to work with him and play with him and I was interested in the field. But then I studied psychology and then I just randomly came across a job in London at Snowflake School where I work with autistic children and I fell in love and I realized, you know what? मैं इन बच्चों की वर्ल्ड में चली जाती हूँ जिस वजह से मैं इनको समझ सकती हूँ और वो रियलाइज़ करते हैं कि इस्मा भी मुझे समझते हैं, तो इस वजह से मैं बच्चों के साथ बहुत आसानी से इनके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ. एंड जब मैंने इनके साथ काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 95% क्लाइंट्स जो नहीं बोलते थे अब बोलते हैं, अब वोकल हो गए हैं, नॉन वोकल थे अब वोकल हो गए हैं, बिकॉज हमने उनको उस तरह से सिखाया था, समझा था कि हम उनके दिमाग में जाके उनको समझने हैं. सो आई जस्ट रियलाइज आई लव द वर्क आई डू, आई कैन कनेक्ट विद किड्स, माई कजन्स ऑटिस्टिक. आई रियलाइज पाकिस्तान में इतनी नीड है, तो फिर मैं पाकिस्तान 5 साल पहले आके मैंने काम शुरू किया था. ओके, टॉयलेट ट्रेनिंग. नीतू, थैंक्स फॉर योर मैसेज ऑन Instagram. Ooh, that's a big topic. I cannot talk about it in too much detail right now. But toilet training, I have a separate video which is on my YouTube channel and on my Facebook page. If you just type in my page, toilet training, you will find the video. It's about 45 minutes long and it's all about toilet training. It's a very long topic to talk about, but how do you work on it? It's important to start working on it with your child after 3 years of age. And what you want to do is you want to first get them to understand the concept of following a bladder when it's full to pee. And you start with pee-pee training and then you do poo-poo training. And to do that, there's a protocol which we use. To kind of quickly summarize it, what it does is आप बार बार बच्चे को पानी देते हैं और every 45 minutes आप बाथरूम लेके जाते हैं. अगर वो पी पी करते हैं आप उनको रिवॉर्ड करते हैं, गुड जॉब. और ये नहीं, उससे नहीं करना, आपको उस तरह से रिवॉर्ड करना है जो रिवॉर्ड उनको पसंद है. आपको लगता है कि गोल्डन स्टार और ताली बजाना रिवॉर्ड होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये रिवॉर्ड नॉट नेसेसरीली होता है. सो यू वांट टू रिवॉर्ड देम विद समथिंग दे लव. एंड इफ दे डोंट पी, आप उनको उठा के बाहर लेके जाते हैं और पानी दे. उनकी एक्सीडेंट हो जाती है तो फिर आप एक प्रोटोकॉल रन करते हैं. यू डोंट पी पी हियर, यू पी पी इन द टॉयलेट. देन यू वॉक विद देम इन द टॉयलेट. आप उनकी शॉर्ट्स उतारते हैं, बिठाते हैं, बोलते हैं यू पी पी इन द टॉयलेट. फिर आप शॉर्ट्स उठाते हैं, वापस लाते हैं, बिठाते हैं. यू डोंट पी पी हियर, यू पी पी इन द टॉयलेट. वापस ले आते हैं, बाथरूम उठाते हैं, पैंट उतारते हैं, बिठाते हैं पॉट पे, कहते हैं यू पी पी इन द टॉयलेट. फिर पैटर्न ये 3 बार करते हैं. इससे बच्चे इरिटेट होते हैं. अब आपको लग रहा है आपकी लव समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे, लेकिन ये आगे पीछे से चिढ़ रहे हैं और ये उनकी कॉन्सिक्वेंस है. ये पनिशमेंट नहीं होता, इसको कहते हैं ओवर करेक्शन प्रोसीजर. सो देन व्हाट हैपेंस इज दे लर्न दैट व्हेन दे वेट दे हैव टू डू दिस बैक एंड फोर्थ थिंग and they don't want it. So in the future they're more likely to develop bladder control. But there's a lot more for me to say on this topic, so I would definitely recommend you watch the talk on that. Okay, let's have a look. My child is okay. So Maria said, my child does not speak, but he is verbal in his own voice, physically touches things that he wants, does baby talk all the time. He was sensitive to social gatherings, but he's getting better with time. Does all this count as being autistic? Then she says he started to cry very loudly when things don't go his way, and he also gets settled right away. Maria, I cannot say with this information if he's autistic. It is not enough information, and I don't want to wrongfully say that he is when he may not in fact be. आप बस नोटिस करें कि
आपके बच्चे की नेम रिस्पॉन्डिंग कैसे, आई कॉन्टैक्ट कैसे, वो कितने साल के हैं, शायद उनकी सिर्फ स्पीच डिले हो, बिकॉज अगर वो आवाज़ें निकालता है दैट्स गुड, इंकरेज दैट। अगर वो आवाज़ें निकालता है आप उसकी आवाज़ों को कॉपी करें ताकि वो सोचे कि आप समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, एक्नॉलेज करें। और ऐसे आप भी कर सकते हैं कि अगर उसको कुछ चाहिए तो अगर उसको वो जो भी चीज़ चाहिए उससे पहले एक आवाज़ निकलवाएं, जैसे बब्बा, बब्बा बोलेगा वो चीज़ देंगे, कोई भी आवाज़ हो, इट डजंट हैव टू बी द नेम ऑफ द आइटम, मेक इट ईजी साउंड फॉर द आइटम। साउंड बब्बा बोलेगा आप दे दें, फिर अगले आइटम चाहिए आ बुलवाएं फिर आप दें। सो you can develop communication through even sounds and then you can come to words. But Maria, I would love to answer it, but I can't, it's not enough information. But what I would recommend is if you would like to come in for a consultation for a full in-depth assessment analysis, आप आ जाए हमारे पास। मेरी manager Jasmine है, she manages our number, Facebook page, Instagram page, so feel free to message there. Also, recently, to all those parents who are watching who have an autistic child who is a teenager, adult, I have just released a video about ASD, autism spectrum disorder in teens and adults, and it's a very informative video. I try to put in a lot of information because I find there is very little information in Pakistan about this topic, and I'm going to try and put more information about it because बच्चे forever छोटे नहीं remain होते, वो बड़े भी होते हैं, उनकी भी बहुत नीड्स होती हैं। तो I highly recommend it. It's on my YouTube page, my Facebook page. Please watch it. It will be very beneficial to you. One last question I'm going to address is schooling. A lot of parents think कि मेरे बच्चे को तो स्कूल जाना ही जाना है, लाजमी जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आप चाहते हैं ना जाएं। लेकिन मैंने एक चीज़ क्लैरिफाई करना है कि it's not necessary that a child with autism has to go to school, because maybe they don't have the prerequisite skills to be in a school. To go to school, a child needs certain skills: sitting tolerance, following instructions, communicating their basic needs, understanding instructions. There are a lot of skills a child requires before going to school, which I just mentioned. अगर वो skills बच्चे के पास नहीं है, स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं, because जो schools होते हैं वो I'm not saying always, उस वक्त आप पहले prerequisite skills पे काम करना चाहिए। हम ABA थेरेपी में prerequisite skills पे ही करते हैं काम, थेरेपीज में काम होता है। आप ये पहले ये स्किल्स डेवलप करें, फिर आप स्कूल का सोच सकते हैं। बट लाजमी नहीं है कि आपके बच्चे को स्कूल जाना चाहिए अब भी क्योंकि वो 3 साल के हो गए और आप चाहते हैं। बिकॉज देखिए कभी कभार क्या होता है, आप भेज देते हैं लेकिन कभी कभार स्कूल का फ़ायदा नहीं होता जो होना चाहिए, बिकॉज वो बच्चा उस लेवल पे नहीं है। तो ऑलवेज थिंक कि व्हाट इज़ बेनिफिशियल टू माई चाइल्ड अभी इस वक्त। अगर वो स्किल्स नहीं है तो स्कूल ना भेजें जब तक वो स्किल्स आएँ। Okay, so I'm going to wrap up now from this talk today. Thank you so much. I know it's Sunday, आप सब busy होंगे, रमज़ान है, सब नमाज पढ़ रहे हैं, इफ्तार ये वो, but जो भी आया था, thank you for tuning in. Stay tuned because there'll be many more videos coming, and I saw your messages. It was lovely to meet all of you yesterday, Sadia, at the SOP event, and thank you for sending such kind, encouraging messages. Honestly, मैं ये सारा आप ही के लिए करती हूँ। मेरे पास knowledge है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत grateful हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना है कि मैं इस information share करूँ। तो please stay tuned, keep watching, and many more videos to come your way, and I hope I addressed your questions, and if I didn't, feel free to reach out to me privately, and inshallah we can set up a meeting, a consultation, आप आ जाएं और हम आगे लेके जा सकते हैं। Thank you to you all. खुदा हाफिज़। आपने इससे